friends, welcome to our channel Vishesh English Spoken Classes. Friends, do you want to speak in English fluently without any hesitation? So, आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है. It is really captivating video for you guys. Okay, I have 5 tips for you guys so that you can follow those tips and you will be articulate speak in English. Okay, then उसके पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकॉन. आप बेल आइकॉन प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियो से चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएंगे. ओके, then let's get start. Let's talk about those 5 tips which is I have for you. First 5 tips: reading, listening, writing, watching and speaking. Yeah, you have to follow 5 tips for the fluency. If you wanna be fluent in English, then you want to be fluent in English, then you have to follow 5 tips which is I have for you. Okay, and let's start. Reading. Reading is important. Friends, first of all tell me, do you read newspaper in your mother tongue? Yes? Yeah, I knew it. Then stop reading newspaper in your mother tongue and start reading newspaper in English. आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रही हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंग्लिश को जब हम समझते ही नहीं तो पढ़ने का क्या फ़ायदा. देयर इज़ नो यूज टू रीड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश. बट माय डियर फ्रेंड्स, if you start reading newspaper in English rather than your mother tongue, it will be beneficial for you, because if you read newspaper in English, then definitely you will learn these new sentences in English. Okay, my dear friend, that's why I'm saying stop reading newspaper in your mother tongue and start reading newspaper in English for the articulation, for the fluency you have to do. Okay, and it will be boom, it will be like a boom for you, like nectar. nectar का मतलब आप जानते हो फ्रेंड्स. nectar, poison, विश, नेक्टर, अमृत. अमृत. ओके, एंड ओके, चलिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बट नेचुरल आपको कोई ना कोई न्यू विख्यात मिलेगा तो आप हैप्पी हो जाओगे. हाँ, मुझे आज से एक न्यू विख्यात मिला, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा. There is no use to read that newspaper if you don't implement whatever you read from that newspaper. So my dear friends, whatever you learn from that newspaper, try to implement those vocabularies, those sentences in your daily routine life conversation, by conversation, okay, in English. And second thing, whatever you read, start writing. Okay, तो इससे आपकी जो राइटिंग स्किल है इंग्लिश में वो इम्प्रूव होगी. एंड स्टार्ट वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑल्सो. लिसनिंग सॉन्ग्स. ओके, जो भी आप सुन रहे हो कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही सुनो. इट डजेंट मैटर इनिशियली मे बी you will find difficulty to understand, but after couple of months you will be able to understand those songs, those movies, those web series, those YouTube videos. Okay, for that you have to start and you have to do like this if you want to conquer. Okay, if you want to eradicate your fearness, if you want to like remove your hesitation, then you have to do. If you want to be articulate, if you want to be fluent in English language, if you want to be speak in English fluently and confidently, then you have to do whatever I'm saying, my dear friends. Okay, and really I'm giving you 100% guarantee it works very well. It's my personal experience. Even I taught myself
जब मैं अकेली बैठती हूँ कहीं भी तो मैं इंग्लिश में बात करती हूँ और अपने आप से करती हूँ. डजंट मैटर आई ऑल्सो डोंट हैव इंग्लिश एम्बियंस. मेरे पास भी इंग्लिश एम्बियंस ऐसा नहीं है कि चारों तरफ मेरे सब इंग्लिश ही बोल रहे हैं. No, it is not possible to all time speak in English at home, but you can create ambience around you because like आप अकेले बैठे हो इंग्लिश में स्टार्ट बात करना. Even you can talk in English yourself. You can speak in English yourself. आप सोचेंगे how is possible? Yeah, it is possible. Talk. I can think about this curtain. Okay, wow, nice color. Hey, Poonam, where did you buy it? And reply yourself. Okay, wow, this is nice color. Yeah, really, is it? And where did you buy it? When did you buy it? And please draw the curtain. Okay, draw the curtain. इस तरीके से आप sentences खुद से बोलो, बनाओ और reply दो. It doesn't matter initially you speak correct or incorrect. It doesn't matter. But आप ये सोचो ना कि कम से कम आप इंग्लिश में अपना मुंह खोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, इंग्लिश में आप सोच रहे हो, आप कोशिश तो कर रहे हो. ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिन ये ट्रिक तो जरूर अपनाना. 100% वर्क करता है. इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. Watching is also very important. Whatever you watch, like web series, like YouTube channel and YouTube videos, and whatever you watch, movies, web series, YouTube channel, try to watch in English language. And whatever you learn from those web series, from those videos, try to implement those vocabulary, those sentences in your daily routine life, in your daily routine conversation, which is very important for your English speaking journey. If you wanna be a success in your journey, then definitely you have to do like this, my dear friends. Okay, then start. आज से आप शुरू कर दो. पागलपंती भी जरूरी होता है. You have to give your 100%. You have to become like crazy, and you have to dive yourself. You have to immerse yourself. Okay, then you will be able to speak in English fluently without hesitation. You will be speaking English. I am giving you 100% guarantee. साथ में बोल रही हूँ. I am giving you 100% guarantee, my dear friends. Okay, तो आपने रीडिंग भी करनी है. आपको जो भी देखना है आप वॉच करते हो. जो भी मूवीज एंड जो भी आप वॉच करते हो आप उसको इंग्लिश में देखोगे. और जो भी आप वॉच करते हो उन वर्ड्स को, उन लाइन को, उन सेंटेंसेस को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो. इम्प्लीमेंट मीन्स उसको लागू करना शुरू कर दो. ओके माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर दैट आपने सुनना भी जरूरी होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सुनोगे, बचपन से हम जो सुनते और देखते आ रहे हैं, अपने मदर टंग के लिए हमें किसी क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती है ना फ्रेंड्स. हम अपने मदर टंग को सुन के, देख के ही समझ जाते हैं कि ये पानी है, ये खाना है, ये दादा है, इनको दादा बोलते हैं, इनको दादी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो एम्बियंस हमें बचपन से ही मिल गया है. मेरा एम्बियंस क्या है? हिंदी इज़ माई मदर टंग. तो मुझे हिंदी की क्लास मतलब बोलने के लिए, फॉर स्पीकिंग, मुझे हिंदी की क्लास नहीं लेने की जरूरत. देयर इज़ नो नीड टू अटेंड हिंदी क्लासेस फॉर स्पीकिंग. क्योंकि मुझे वो एम्बियंस बचपन से मिला है. मैं देखती आ रही हूँ, मैं सुनती आ रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ. नॉट ओनली मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ जो अपने मदर टंग में बोलते हैं उन्हें. क्योंकि बचपन से ही उन्हें वो एम्बियंस मिलता है, वो एम्बियंस मिला हुआ है. वो बचपन से हिंदी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी, मराठी में सब सुनते हैं, इसलिए वो बोलते हैं. बट इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग. और हमारे पास वी डोंट हैव इंग्लिश एम्बियंस. दैट्स व्हाई वी नीड practice. We need practice. Practice makes man perfect. Okay, then जो भी सुनो आप सॉन्ग्स इंग्लिश में सुनो. It doesn't matter. Initially you will find some difficulty to understand those lines, but after a couple of months you will be able to understand those lines. Yeah, and it is really amazing method. Follow it. Start. Implement these 5 tips. Okay, and speaking is the most important
for your English speaking journey. Whatever you watch, whatever you listen, whatever you write, try to speak. Without speaking, it is not possible to be articulate in this language. Do you want to be articulate? Do you want to be fluent in this language? You have to open your mouth in English language. Okay, my dear friends? Then it doesn't matter you don't have partner. You can talk to yourself. There is no need to petrify it कि हम correct बोल रहे हैं कि incorrect बोल रहे हैं. Initially you started your journey, then don't worry about that. Okay, my dear friends? For आप follow करेंगे और English में बोलेंगे. Tata, bye bye, take care, keep smiling, keep practicing, like and subscribe my channel. Bye bye, take care, bye.